बेटा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर क्या है बेटा आपका, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिलते हैं। अब जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, हम लोग एनिमल्स प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। एनिमल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए हम लोग सारी चीज़ के लिए जो जितनी भी हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उन सभी के लिए हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है और एनिमल्स पर डिपेंड है। इट मीन्स वाइल्ड लाइफ, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्स अब क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये कम पड़ने लगे हैं, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोग इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उन सभी को नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, वाटर को कैसे मैनेज करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना चाहिए, प्लांट्स को कैसे बचाना चाहिए। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमें किस प्रकार से मैनेज करना है, ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट anything in the environment which can be used is called natural resource. It's called natural resource. ठीक, सो दिस इज द नेचुरल रिसोर्स। अब अगर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है एक सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, इनकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग the use of natural resources in such a way as to avoid their wastage, and to use them in the most effective way. Use them in the most effective way is called natural resources.
इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट the development which meets the current basic human needs, and also preserves the resources, for the needs of future generations, for the needs of future generation is called sustainable development. Is called sustainable development. ठीक है, तो sustainable development means the requirement which future generations want meets them. ठीक है, natural resources means बेटा anything in the environment which can be used is called natural resources. And what is the management of natural resources? A system of controlling the use of natural resources in such a way as to avoid their wastage and to use them in the most effective way is called the management of natural resources. Management of natural resource. Okay. Now the sustainable development, the development which meets the current basic human needs and also preserves the resources for the needs of future generation is called sustainable development. It means जो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन की नीड है उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो इस समय ह्यूमन की नीड है, वो ह्यूमन की नीड जो नेचुरल रिसोर्सेज से नेचर से हमें मिल रही है उसको प्रिजर्व करके रखना है। क्यों प्रिजर्व करके रखना है? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे इस तरीके से डेवलपमेंट हो, यानी कि हमारे कंट्री का या हमारे इस वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरीके से, यानी इस मेथड से किया जाए जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकें। तो वी हैव टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द, उस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है व्हाई we need the management या प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स। क्यों हमें क्या जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखने के लिए? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। एक क्वेश्चन लिखना है आपको, व्हाट इज द नीड टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लिखिए why do we need to manage our resources? Why do we need to manage
resources. Why do we need to manage our resources? Resources को manage करने की क्या जरूरत है? This is the question. ठीक है बेटा, आंसर आपको लिखना है we need to manage our natural resources. Natural resources because of the following reasons. Because of the following reasons. Number one, the resources of the earth are limited. The resources of the earth are limited because of the rapid increase in human population, because of the rapid increase in human population, because of the rapid increase in the human population, the demand for resources is increasing. Because of the rapid increase in human population, the demand for resources is increasing day by day. Number two, the proper management of natural resources takes into consideration long-term view and prevents their exploitation ये लिखिएगा सेकेंड पॉइंट। अभी इसके आगे दो पॉइंट और लिख पाएंगे बेटा आपको, ठीक है। तो पहले ये दो देखिएगा, वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन इज द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, यानी कि वेस्टेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। डिमांड रिसोर्सेज की बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, इसीलिए ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की। नेक्स्ट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स इनटू कंसिडरेशन
लॉन्ग टर्म व्यू एंड प्रिवेंट्स देयर एक्सप्लॉइटेशन। हमें लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन को देखना है, इसीलिए हमें उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट देखिए, इसके आगे अभी और 2 पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, the proper management can ensure the proper management can ensure equitable distribution of natural resources equitable distribution of natural resources so that all people can benefit all people can benefit from the development of these resources, from the development of these resources. And the fourth is the proper management the proper management will take into consideration the damage caused to the environment during the extraction or use of the natural resources use of the natural resources and find ways and means to minimize this damage. Example, if some forest trees have to be cut, if some forest trees have to be cut for various purposes,
for various purposes, then the damage to the environment can be minimized by planting new saplings in place of cut down trees. ठीक है बेटा. Third point is the proper management can ensure equitable distribution of natural resources so that all the people can benefit from the development of these resources. सारे ही लोगों को benefit मिल जाए, इसीलिए management करना जरूरी है. The proper management will take into consideration the damage caused to the environment during the extraction or use of the natural resources and find ways and means to minimize this damage. ठीक है, जिससे कि डैमेज ना हो. जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, सम फॉरेस्ट ट्रीज हैव टू बी कट. फॉरेस्ट ट्रीज को तो काटा जाएगा बेटा, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज से बहुत सारे हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो फॉरेस्ट की ट्रीज को तो काटना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉरेस्ट की ट्रीज को काटा जाता है तो उसकी जगह पर नए प्लांट्स भी लगाने चाहिए. दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ natural resources. ठीक है, if some forest trees have to be cut for various purposes, then the damage to the environment can be minimized by planting new saplings in place of cut down trees. जितने भी trees वहाँ से cut down किए गए हैं उसकी जगह पर नए plants लगाने चाहिए. This is the management of natural resources. तो ये हमने पढ़ा है why do we need to manage our natural resources. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने की, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है. ठीक, चलिए तो कल हम लोग वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. कल हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ.